Good morning, all. Today we are going to deal with the topic financial decision. Now, what is financial decision? It refers to the decision concerning the financial matter of the business. Now, the financial decision is divided into three parts. They are investment decision, financing decision, and dividend decision. Now, what is investment decision? Investment decision is concerned with investment of firms or business funds in different assets. That is investment of business funds in different assets. Now it is again divided into two parts, that is capital budgeting decision and working capital decision. Now what is capital budgeting decision? Capital budgeting decision means this, it is all, first of all, capital budgeting decision is also known as long term decision. दो नाम है. Capital budgeting decision is also known as long term decision and working capital decision is also known as short term decision. Now what is capital budgeting decision? This decision relates to the decision taken to invest in fixed assets. What decision, that is जो भी decision हम fixed assets में invest करने के लिए लेते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते हैं. लॉन्ग टर्म डिसीजन इसलिए है क्योंकि फिक्स एसेट्स जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परचेज की जाती है. Therefore, these decisions relate to investment in fixed assets, such as investment in plant and machinery, investment in new machine to replace an existing one or acquiring, you can say, new fixed assets or opening a new branch. Capital budgeting decision जो है, it is investment in fixed assets पहला. Then तीन चीजों को ये affect करता है. It affects the size of assets, profitability and competitiveness. They are affected. These three things are affected by capital budgeting decisions. एग्जाम में ये एमसीक्यू में आता है. क्या है? साइज ऑफ एसेट्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. दैट इज दे आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स है तो साइज ऑफ एसेट्स को इफेक्ट करेगा. जब हम एसेट्स खरीदेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा और हमारी कंपीटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी. सो दिस affect the size of assets, profitability and competitiveness. Now one more thing, the capital budgeting decision are very crucial for any business. Now why it is crucial? Because once taken cannot be reversed back. अगर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं एक लैंड खरीदूंगी, अब मैंने वो डिसीजन ले लिया, उसको रिवर्स नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स जो है मैंने इन्वेस्ट कर दिया है. So once taken, they should be taken with utmost care because they are irreversible decisions. They cannot be reversed back and they affect the earning capacity of the firm over a long run. These decisions normally involve huge outflow of funds and are irreversible because it involves the commitment of huge amount of funds. Therefore, capital budgeting decision must be taken with utmost care. A bad decision may lead the company to adverse financial consequences. तो इसमें जो जो चीजें याद रखनी है, पहला, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लॉन्ग टर्म डिसीजन भी बोलते हैं because it involves huge amount of investment in fixed assets. Then किसको affect करता है? It affects the size of assets, profitability and competitiveness. Then once this capital budgeting decision is taken, that is, it should be taken with utmost care because it involves huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost. Therefore, once taken, it should be taken with utmost care because it is impossible for the company to wriggle out of such decisions. Now I'll come to the next, that is working capital decision. Now what is working capital decision? These decisions relate to investment in current assets. नाम से ही पता चल रहा है ना. पहला तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन को शॉर्ट टर्म डिसीजन भी कहा जाता है. And the decision relates to investment in current assets like cash, inventories, debtors, etc. This decision affect the day-to-day working of a business. Current assets है ना, तो it will affect the day-to-day working of a business. It affects liquidity and profitability of the business.
जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट करता है साइज ऑफ एसेट्स को, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को, वैसे ही वर्किंग कैपिटल डिसीजन इफेक्ट करता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन. इट अफेक्ट्स द liquidity and profit, क्योंकि current assets can be easily converted into cash, therefore it affects liquidity and profitability of the business. Efficient cash management, inventory management and receivable management are essential ingredients of sound working capital management. क्योंकि इसमें ये तीनों चीज आ जाती है. ये भी एग्जाम में आता है एमसीक्यू में. एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. नाउ हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो पार्ट पढ़ लिए, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म डिसीजन and working capital decision also known as short term decisions. Capital budgeting decision affects the competitiveness, size of assets and profitability of business, and working capital affects the profitability and liquidity of a business. Now we'll go to the financing decision. Now financing decision again has got two parts. Financing decision again has got two parts. Just see in the flow chart. That is owner's fund and borrowed fund. Flow chart से आपको थोड़ा easy हो जाएगा पढ़ने के लिए. Financing decision, again I am repeating, it is again divided in two parts, that is owner's fund and borrowed fund. Now what is financing decision? It deals with determination of source of finance, amount to be raised from each source, that is owner's fund or borrowed fund, and the cost of each source of fund. Now we'll discuss about the owner's fund. Owner's fund consists of equity capital and retained earning. Owner's fund में क्या क्या आ जाता है? Equity shares आ जाता है, retained earning आ जाता है, and then borrowed fund includes debentures, loan from bank, loan from financial institutions. Now financing decision is concerned with deciding how much amount to be raised from owner's fund and how much to be raised from borrowed fund. Both the source have their own merits and demerits. मतलब कितना हम ओनर्स फंड से लेंगे, किस प्रपोर्शन में, और कितना हम बोरोड फंड से लेंगे, क्योंकि दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, जो कि मैं अभी बताऊंगी. If we go, for example, if we go to debt means debentures या loan. Debt is considered to be cheapest of all the source. Now why it is cheapest? Because there is tax deductibility of interest, because the firm gets tax deduction on the payment of interest, therefore it is the cheapest source of fund. But it is riskier. Why it is riskier? Because the firm has to make the regular payment of interest. अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आपका सबसे पहला कमिटमेंट ये होता है कि उसको इंटरेस्ट का पेमेंट रेगुलर करो. Debt is the cheapest source of all the funds and it is also riskier. Cheapest इसलिए कि firm gets tax deduction on the payment of interest, and it is riskier because the firm has to regularly make the payment of interest. ध्यान से सुना. Debt जो है it is the cheapest source as well as the riskier source. Cheapest क्यों है? Because the firm gets tax deduction on the payment of interest, and it is riskier because regular payment of interest has to be done. On the other hand, if we see owner's fund, they are less riskier as there is no such commitment regarding the payment of dividend on the repayment of capital. That is, it's not compulsory for the firm if it is not earning profit to make the payment of dividend or repayment of capital. So cheapest is debt and riskier is debt, but equity is, you can say equity जो है it is not riskier. Why it is not riskier? Because regular payment of dividend as well as the repayment of capital is not compulsory on that. अब इसमें एक और चीज है कि what is financial risk? रिस्क क्या? दैट इज द रिस्क ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क. जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो एक रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है कि वी हैव टू मेक द रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट इज फाइनेंशियल रिस्क. द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, which has to be considered by a firm.
It means there is some amount of financial risk in debt, and the overall financial risk depends upon the proportion of debt in the total capital. अगर debt ज़्यादा है तो firm के पास risk भी ज़्यादा है, because it has to make the regular payment of interest. Now, financing decision involves the analysis of risk and cost associated with each source of finance in order to have a judicious mix of both debt and equity. Borrowed funds are considered as the cheapest source of fund. अभी मैंने बताया, as interest paid is a deductible expense from computation of tax liability, and the cost of raising funds is known as flotation cost. अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि फाइनेंसिंग डिसीजन में दो चीजें आती है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड. अब ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड में आ जाएगा इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोरोड फंड में आ जाएगा डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नाउ अगर हम बोले विच इज द चीपेस्ट सोर्स, तो हम बोलेंगे बोरोड फंड, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड बिकॉज द फर्म गेट्स टैक्स डिडक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. चीप इसलिए है क्योंकि उस पर हमको इंटरेस्ट जो भी पे करते हैं उस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है. एंड रिस्कियर है बिकॉज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है. और ओनर्स फंड अगर हम देखें तो ओनर्स फंड जो है वो रिस्कियर नहीं है, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी इफ द फर्म इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. आपको पता है 11th में भी पढ़ा है कि अगर इक्विटी शेयर्स पे हमें डिविडेंड देना जरूरी नहीं है. अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो हमें डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, इसलिए इट इज नॉट मच रिस्कियर. नाउ व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? इसमें एक और चीज आती है, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट. दोनों पे लगती है कॉस्ट. अगर हम उधार लेंगे तो भी कॉस्ट लगती है, और अगर हम इक्विटी से पैसा रेज करेंगे तो भी लगती है. बट इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा रेज करोगे तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगती है. आपको मालूम है प्रोस्पेक्टस छपाने पड़ते हैं, और लीगल एडवाइजर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज मोर ऑन ओनर्स फंड देन ऑन बोरोड फंड. उस पर भी है बट कम है. नाउ विल गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, and that is dividend decision. Now, what is dividend? You all know. Dividend is a part of profit given to the shareholders. It is a part of profit given to the shareholders after keeping some amount as retained earning. So that is dividend decision. बहुत easy है. What is financial decision? इसका फ्लो चार्ट वापस देखेंगे हम लोग. So financial decision के 3 parts हैं, and that is investment decision, financing decision and dividend decision. Investment decision is divided into 2 parts, capital budgeting and working capital. Capital budgeting decision को long term decision भी बोलते हैं, working capital decision को short term decision भी बोलते हैं. Capital budgeting decision affects 3 things. क्या क्या है? Size of assets, profitability and competitiveness. Working capital decision will affect profitability and liquidity of a firm. Now we'll go to financing decision. It is again divided in 2 parts, that is owners fund and borrowed fund, and a firm should have judicious mix of both equity and debt, you can say. That is owners fund and borrowed fund. Now owners fund में क्या क्या चीजें आती है? इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है. borrowed fund में क्या आ जाता है? डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. And dividend decision, dividend is a part of profit that is given to the shareholders after keeping some amount as retained earning. So this is about financial decision. इसका फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेना. फ्लो चार्ट अगर आप देख के पढ़ते हो तो फाइनेंशियल डिसीजन बहुत आसान होता है, और पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा फाइनेंशियल डिसीजन पे ये वाला बेस्ड है. प्लीज सी द फ्लो चार्ट, रीड द बुक. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.